Hello, good morning, students. I think you are also fine. Today, we are discussing the topic of journal and special funds, which is very important topic of 10 plus 2, which is connected from the chapter Financial Statement of Not-for-Profit Organization. So, what do you mean by the journal and special funds? In the case of profit organization, there is no capital account. मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया जाता. तो द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड द आउटसाइड लाइबिलिटीज, इसीलिए एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो डिफरेंस आएगा उसे हम किस नाम से बताएंगे? कैपिटल फंड के नाम से. एंड द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर्ड इन दिस फंड एवरी ईयर. इस फंड के अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस आता है, जिसे हम सरप्लस या डेफिसिट कह सकते हैं, उसे इस फंड में डाल दिया जाता है. दिस कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जर्नल फंड. इसे हम जर्नल फंड के नाम से भी जानते हैं. एंड इट इज़ डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम विद द स्पेशल फंड्स. इसमें क्या होता है कि इसको हम स्पेशल फंड्स विच द ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस. जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक स्पेशल पर्पस से क्या करती है, उसको क्रिएट करती है. नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल. हाउ विल यू show the following information in the balance sheet of the sports club. Here we are taking, that is tournament expenditure, that is 30,000, tournament funds 2 lakh, tournament fund investment also 2 lakh, donation for the construction of swimming pool, that is 3 lakh, and the government bonds is 50,000. Now how to solve this problem? First of all, वी मेक द बैलेंस शीट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं. एज एट जो भी डेट हमें मेंशन कर रखी होगी, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, टूर्नामेंट फंड टोटल अमाउंट दैट इज 2 लाख, उसको हम लाइबिलिटी साइड में ले आएंगे 2 लाख. आफ्टर दैट, इफ सम एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड विद द फंड्स, दैट इज tournament fund expenditure, that is 30,000, we will deduct from this fund. Remaining balance will be 170. After that, tournament fund investment is also transferred to the asset side, that is 2 lakh. After that, donation for the construction of swimming pool, that is 3 lakh, we will also transfer to the liability side of the balance sheet. Why we are doing this? Because it is the special purpose. You can say that donation for the construction of swimming pool. So we expend this money only for the construction of the swimming pool. Last point, government bonds, that is 50,000. So it will also be transferred to the asset side of the balance sheet. Now we are taking the next example. Show the following information in the financial statement of the not-for-profit organization. Here we are doing something different. Let's see. Part A, match expenses 8 lakh, match fund 4 lakh, donation for the match fund 240, and sale of the match ticket 360. Now solution will be match fund, that is 4 lakh. Okay, donation received 240 will also be added in this amount, plus sale of the match ticket, that is 360, we will also add this amount. Now total will be 10 lakh. Now the match expenses will be 8 lakh. We subtracted from this 8 lakh, that is remaining balance will be 2 lakh. Okay, now the second question is that what will be the effect, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, if the match expenses go up by, कितने से बढ़ा दिए जाएं, 250 से बढ़ा दिए जाएं. तो अब क्या करने वाले हैं हम? तो देखो इससे क्या रहेगा, अभी हमने इसमें देखा कि सभी टोटल जो मैंने काउंट किए वो कितने से, टोटल 10 लाख. फंड से रिलेटेड जो भी हमारे पास इनकम थी उनको हमने ऐड कर लिया, दैट इज टोटल 10 लाख.
but match expenses in a part, that is 8 lakh, but here according to question go up by 250. So 250, that is 8 lakh plus 250, 10 lakh 50,000. So the net balance of the match fund is become negative by 50,000, which will be shown on the debit side of the income and expenditure account, because we have no sufficient balance to recoup the match expenses. Now here are some questions to solve this. Question number 1, answer also given with this question. Question number 2 with the answer. Now we are starting the next topic, that is entrance fees, or you can say the admission fees. So how will you deal with the entrance fees while preparing the final account? जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो आप एंट्रेंस फीस के साथ कैसे ट्रीट करेंगे? क्योंकि इससे पहले हमने जो वीडियो में बताया था उसमें क्या पॉइंट हुआ था कि एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस के बारे में यदि हमारे पास से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एंट्रेंस फीस को हम सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम बनाकर ट्रांसफ़र कर देंगे. ओके नाउ, और यदि हमारे पास क्वेश्चन में कहते हैं कि नहीं आप उसको कैपिटलाइज करें, तो कैपिटलाइज करेंगे तो दैट मीन्स वी विल ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट इन विच साइड, लायबिलिटी साइड. नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स ऑफ द एंट्रेंस फीस. ए क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 120. इसका मतलब इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो इस पार्ट को हम कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2018 transferred by entrance fees, that is 120, because in the absence of any information we will transfer to the income side of the income and expenditure account. Now B part. During the year 2017-18 entrance fees received by 120 अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी ऑफ द क्लब की क्या पॉलिसी है कि 30%, ठीक है, ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज. इसको हमने कैपिटलाइज करना है. सो दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, एक्सपेंडिचर एंड income will be 70%, because as per the question 30% of the entrance fees is to be capitalized. So entrance fees will be 120 into 70%, 84,000. Now the remaining balance of the liability side, capital fund plus entrance fees 30%, यानी 120 into 30%, that is 36,000 will be transferred to the liability side. Okay, here we are given some questions for the homework. Answer is also available in the last. Now next point is capital receipts and revenue receipts. Capital receipts, it include those receipts which will yield a benefit of the entity in the current year as well as the future years. इस साल भी हम उसका बेनिफिट ले लें, नेक्स्ट ईयर में भी. देयर आर नॉन रिकरिंग नेचर. नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब आवर्ती नहीं होती हैं, डेली होने वाले एक्सपेंडिचर नहीं, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस हैं, एंडोमेंट फंड्स हैं, डोनेशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस हैं. ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, और डोनेशन फॉर द क्लब, पवेलियन एटसेट्रा एंड लीगेसी. इट शुड बी रिटर्न. कहाँ दिखाएंगे हम इसको? It should be written on the liability side of the balance sheet. Now, revenue receipts. It appearing on the debit side of the receipt and payment account. इसे हम कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं. फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन है, रेंट है, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, एंट्रेंस फीस, सेल्स एंड ओल्ड न्यूज़पेपर. These should be the posted to the credit side of the income and expenditure account. Okay. Now our next video will be related to the topic of subscriptions. Okay. Thank you.